Panipat to the stadium in Paris. His journey has been truly extraordinary. Excellence personified, an icon of Indian athletics and the pride of our nation, Neeraj Chopra. Let's take a look at his incredible journey at these games. Neeraj? Champion out onto the track, and that gold medal coming on debut last time out. Looking at that. तो देखिए आप पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है और अभी आपने हाल ही में देखा जब नीरज चोपड़ा को मंच पर बुलाया गया और उनकी जो जर्नी है, जो उनका अथक प्रयास है, अभ्यास है, उससे दिखाया जा रहा है। वहां पर अन्य खिलाड़ी भी मौके पर मौजूद हैं। पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का सम्मान समारोह है ये और आप देखेंगे कितने उत्साह के साथ खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि चेयरपर्सन नीता अंबानी ने यहाँ पर एक इंडिया हाउस का उद्घाटन भी किया था और इस इनॉग्रेशन के बाद से यहाँ पर two-time Olympic medalist Neeraj Chopra. And now, after a gap of 40 years, this young team has reclaimed that greatness with back-to-back Olympic medals, first in Tokyo and now in Paris. With excitement and pride, I welcome our India's hockey team for the heroic performance in Paris. You have played with your heart and made every Indian proud. Friends, to celebrate these incredible athletes, please join me in welcoming on stage the proud members of the hockey team. He needs no introduction, the Great Wall, Trijesh. Abhishek, Amit, Sanjay, Friends, now let's cheer for an athlete who has made us all proud on his Olympic debut. Born in a humble family in Haryana,
and orphaned at the age of 11, he has prepared efforts to become India's youngest Olympic medalist. You know who am I talking about? Aman on stage, our 21-year-old. Aman, you have proved that only talent, ability and hard work matters. God bless you. Friends, I would now like to salute a young girl who is not present here today, but whose spirit has inspired the entire nation. She is a true fighter and a winner, not just in the ring, but in life. A very brave daughter of our soil, our champions of champion, Vinesh Phogat. विनेश, आपकी काबिलियत, निडरता और इंसानियत के गीत सारा देश गुनगुना रहा है। आपकी हर जीत, हर कोशिश और हर संघर्ष में पूरा भारत आपके साथ है। Yes, she needs a round of loud cheer. It's stories like yours that become legends, told over and over from generation to generation. Friends, let's send Vinesh the loudest cheer to show her that she is not alone in this challenging time. And now let's celebrate and call on stage more members of the Indian contingent. From the athletics team, we have Priyanka, Suraj, Jyoti, Kishore, Abdullah, Praveen, Anu, Sarvesh, Kiran, Jyotika, MR, Prachi, Shubha Venkatesh, Vidya Ramraj, Mohammad Ajmal, Mohammad Anas, Rajesh, Santosh Kumar, Vijay Chaku, what a moment of pride to have all our champions on stage. And now, let's wish all the best to Team India athletes who are still in the competition. Our golfers Aditi and Diksha Dagar. And our Reliance Foundation wrestler Ritika Hooda. Before I end, I would like to say today is the second last day of our India House. Tomorrow, the curtains come down on these beautiful walls in Paris. India House will bid goodbye. Like the games, the show here will come to an end. But what will remain is etched in our hearts and will remain as memories for always are the cheers of love and support from each one of you, our audience and the fans. A big round of applause to all the friends and fans of India House. At India House, we have had the honor of welcoming nearly 40,000 people, with almost half of them being international guests. Together, we have danced on Bollywood music,
relished Indian food, celebrated Indian culture, revived our traditions, shared our joys and heartbreaks, and cheered for Team India. In India, we say, Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. India House has exemplified that spirit. And what a family we have been. I was especially moved when a France television journalist reported that if country pavilions were a category in the Olympics, India House would win a gold. And that medal, ladies and gentlemen, would belong to each one of you. And to our teams and organizers and volunteers of India House who have worked tirelessly for months to put this together for you. Let's give a big round of applause to all the volunteers. Friends and fans, thank you once again for all the love and affection you have showered on us. Thank you from our hearts. We go back from Paris with memories and hearts full of joy. Until next time, farewell. Au revoir. As we say in Gujarati, Avjo. Avjo. Now may I request all of you to kindly rise for our national anthem. Kindly remain in your places and stand still during the national anthem. Mesdames et messieurs, l'hymne national. तो देखा आपने यहाँ पर ये सीधी तस्वीर आपको हम पेरिस से दिखा रहे थे, जहाँ पर इस वक्त रिलायंस की चेयरपर्सन नीता अंबानी मौजूद हैं और इस वक्त सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके देश को गौरवान्वित किया है। और आप ये देखिए कि पहले पेरिस में इंडिया हाउस की स्थापना और उसके बाद खिलाड़ियों के यहाँ पर रुकने के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था कि जो भी खिलाड़ी पेरिस पहुँचेंगे खेलने के लिए उन्हें लगेगा कि उनका ही घर वहाँ पर है और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर उनके सम्मान के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सभी खिलाड़ियों को मंच पर बुलाकर और उनका किस तरीके से उन्होंने उपलब्धि हासिल की है, कितनी उन्होंने कड़ी मेहनत की है, कितना अभ्यास उन्होंने किया है और किस तरीके से खिलाड़ियों ने ऊपर उठकर देश को गौरवान्वित किया है, ये भी दिखाया जा रहा था। यानी कि हर उस खिलाड़ी की जो मेहनत रही है वो भी दिखाई गई है। और देखिए मंच पर तमाम वो खिलाड़ी भी मौके पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे।